ओके, लास्ट टॉपिक है लैमिस थ्योरम। लास्ट टॉपिक है लैमिस थ्योरम वेक्टर्स में। सो व्हाट इज लैमिस थ्योरम सेज, when three forces acting at a point are in equilibrium, when three forces acting at a point on equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between other two forces. देखो, सपोज मान लो एट दिस पॉइंट में थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, ए बी एंड सी, दीज आर फोर्सेस मान लो। एक एट दैट टाइम में व्हेन द एट दैट सेम पॉइंट में थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, एट दैट टाइम व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा गामा एंड ए बी सी में वी आर सीइंग। अल्फा इज व्हाट, ए वेक्टर फोर्स का ऑपोजिट का टू वेक्टर्स का एंगल इज अल्फा, एंड बी वेक्टर का ऑपोजिट एंगल विल बी बीटा, एंड सी वेक्टर का ऑपोजिट टू एंगल्स का एंगल इज गामा। ओके, एट दैट टाइम वी हैव ए रिलेशनशिप। क्या है लैमिस थ्योरम, क्या बोल रहा है, ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गामा। देखो, ए बाई साइन ऑफ कौन सा एंगल लेने का, ऑपोजिट एंगल का साइन लेने का, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, ए वेक्टर का अदर टू फोर्सेस का एंगल, साइन ऑफ एंगल लेने का। सिमिलरली बी बाई साइन बीटा एंड सिमिलरली सी बाई साइन गामा। दिस इज लैमिस थ्योरम, and this Newton's laws of motion may also it will help you, this theorem. So when we have to apply this theorem, when एक पॉइंट के ऊपर थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग at same point, at that time we can use Lam's theorem to find any theorem. Suppose a b beta is given, alpha you can find, ऐसा anything you can find. So equilibrium means like the net force will Net be force zero, is right? zero. Yes, net force is zero. Done ना? Yeah, चलो ना करो। A bob of weight 3 न्यूटन, एक बॉब है उसका वेट इज 3 न्यूटन्स, is in equilibrium under the action of the string 1 and string 2. A string 1 है, a string 2 है, a forces are equilibrium, they are in equilibrium. Find the tension force of the string. Tension force means nothing but forces try to, okay, आपको टेंशन फोर्स बोल के आपको कौन सा इसमें आएगा, कौन सा न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। आना फाइंड करो। टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग मींस फर्स्ट टेंशन में F1 मान लो एंड सेकंड टेंशन में F2 मान लो, F1 F2 फाइंड कर लो, हो जाएगा। देखो, वी कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम हियर बिकॉज एक पॉइंट के ऊपर थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, बट एंगल्स आपको मालूम पड़ना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू एनीथिंग। कर So सकते हैं isn't देखना। the angle between 2 and 3 90? हाँ, 2 and 3 का 90 है, and this angle is this angle. If I extend like this angle is, देखो, these two are parallel, right? This is transversal, alternate interior angles. Alternate, yeah. हाँ करो, ऐसा यूज करके सॉल्व करो। F2 F1 and 3 newtons. I want F1 F2. This is 90, this is 30. So use Lam's theorem and find the F1 F2. This also 90, right? This will be 60. 60 because total is 90.
Now use करो Lam's theorem and find. So alpha over here is 60. See, alpha, beta, gamma, anything you can take. Which one you are taking? F1 huh? First Yeah, F1 का opposite angle कौन सा है? yeah. So 90. 90. Okay. So F1 by sin 90 is equal to, now F2 का I'm taking. F2 का opposite angle कौन सा? Opposite forces का बीच में. This is one force, this is one force. इसका opposite this angle I want. 150. Yeah. 90 plus 60 is 150. So F2 by sin 150 is equal to 3 newtons by sin of 90. y. इसका ये दो Opposite, एक right? तो ऑपोजिट बोलते दो फोर्सेस का बीच में एंगल, इसको छोड़ के रिमेनिंग टू फोर्सेस का बीच का एंगल So shouldn't it be the 30 and the 60? 30 and 60 नहीं है. देखो वन फोर्स इज लाइक दिस फोर्स इज लाइक दिस. इस फोर्स का ऑपोजिट का Oh, yeah, अदर टू yeah. फोर्सेस का एंगल. सो 90 प्लस 30 इज 120. दोनों फाइंड करो, इक्वेट एंड सॉल्व. Sir, 2 root 3 and root 3. 2 root 3 and root 3. Very good, super. So वही बोला लैमिस थ्योरम ने, proportional to sine of the angle between other two forces. So sine 120 is root 3 Oh. by 2 or minus root 3 by 2. You tell me. Sine 90 plus 30, which quadrant? 90 plus theta, that's in which quadrant? 0, 90, So that's 90. root 3. It's root. Sine is positive. All silver teacups, right? Sine is positive. So sine will become cos, right? Yeah. 90. Use karo. Why will sine? Oh, will change. Change, right? 90 to 70 will change. So, yeah, sir, it's root 3 by 2 only. Yes, root 3 by 2. So karo. F1 is 2 root 3, right? F1 is 2 root 3. F2 is? Sir, F2 is root 3. Yes. Pranav, you got right? Yes, sir. Yes. ठीक है. By this, the complete chapter done successfully.